हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में पैरेलल कैसे एग्जामिन करते हैं। सो डेफिनेशन, इट इज द पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। साइड्स आर लोअर कंजक्टिवा, टंग, that is upper part of the tongue, oral mucosa, palmar crease and nail bed. Then what are the grading of the palmar? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, पैरेलल आप क्लिनिकली डिटेक्ट नहीं कर सकते। मॉडरेट में क्या होगा, पैरेलल विल बी क्लिनिकली विजिबल। देन सीवियर में क्या होगा, पैरेलल विल बी क्लिनिकली विजिबल प्लस द palmar crease will disappear and cervical venous harm will be had. Then there are some situations where there is parallel but no anemia. ओके, चलो देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, सब या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर। सो सर्विकल वेनस आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? यू हैव टू प्लेस योर स्टेथो एट द रूट ऑफ योर राइट साइड ऑफ द नेक। ओके, थैंक यू। Now let's see pictures. Definition: yellowish discoloration of skin and mucous membrane. Then what are the sides? Sclera. So while checking for sclera, you have to say the patient to look downward, and then you have to invert the upper eyelid. Then you have to look for any yellowish discoloration. Then sublingual mucosa, जो कि हम पैरेलल में पढ़े थे कि अपर पार्ट ऑफ द टंग। ओरल कैविटी, पाम, सोल एंड स्किन। सो अभी ये क्वेश्चन है कि हम अनएक्सपोज्ड स्क्लेरा ही क्यों देखते हैं, व्हाई नॉट एक्सपोज्ड स्क्लेरा? द रीजन इज दैट इफ वी चेक द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, व्हाट हैपेंस in the exposed part, the bilirubin deposited, which is insoluble, will be converted to its photoisomer bilirubin, which is soluble. So you can detect it in the exposed part. But if it is detected in the exposed part, it is called muddy sclera. Let's now see some conditions where there will be yellowish discoloration but no jaundice. These are hypercarotinemia, hypothyroidism, excessive exposure to phenol या फिर नाइट्रिक एसिड, then drugs like quinarkin, sorafenib. So now let's see cyanosis. Definition: it is the bluish discoloration of skin and mucous membrane. Then what are the criteria? There are 3 criteria like TFC hemoglobin should be more than 5 gram percentage, and or any abnormal hemoglobin like meth hemoglobin, salt hemoglobin, or the oxygen saturation should be less than 85%. But the important thing is that oxygen saturation is not a mandatory criteria. Then classification: true cyanosis, pseudo cyanosis. Again, true cyanosis is classified into 3 headings like central, peripheral, या फिर mixed. Then pseudo cyanosis में हम देखते हैं etiology of cyanosis. So central cyanosis, इसका 3 कजेस होते हैं like कार्डियक कजेस, पल्मोनरी कजेस और मिसलेनियस कजेस। सो कार्डियक कजेस में देखेंगे cyanotic heart disease, that too increasing pulmonary blood flow and decreasing pulmonary blood flow. जो कंडीशंस pulmonary blood flow increase करते हैं, these are like hypoplastic left heart syndrome, truncus arteriosus, transposition of plate arteries, total anomalous pulmonary venous connection. Then decreasing pulmonary blood flow में
tricuspid atresia, tetralogy of Fowler, and Epstein's anomaly. Now let's see pulmonary causes of central cyanosis. It includes COPD, asthma, respiratory failure of any cause. Then other causes में high altitude, mid hemoglobinemia, salt hemoglobinemia, and carboxyhemoglobin. Now let's see peripheral cyanosis and mixed cyanosis. Peripheral cyanosis includes your low cardiac output states, local vasoconstriction, arterial obstruction, any venous obstruction, या फिर hyperviscosity conditions like polycythemia and multiple myeloma. Mixed cyanosis में left ventricular failure will be the cause, which appear as both central and peripheral cyanosis. Then pseudocyanosis में क्या होता है? There will be etiology like metals and rocks. मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी हो सकता है, एंड ड्रग्स में मिनोसाइक्लिन, क्लोरोक्विन या फिर एम्लोडाइड. Now let's see some atypical presentation of cyanosis. That is differential cyanosis, reverse differential cyanosis, 3/4 cyanosis, intermittent cyanosis, cyclical cyanosis, orthocyanosis, and cyanosis absent despite having sufficient reduced hemoglobin. So differential cyanosis, इसमें क्या होता है? The cyanosis will appear only in the lower limb. The condition is patent ductus arteriosus with Asian mineralization. Then reverse differential cyanosis में cyanosis appears only in the upper part of the body. In which condition? That is patent ductus arteriosus with Asian mineralization plus transposition of great arteries. Then 3/4 cyanosis में क्या होता है? Cyanosis appear both in upper limb and lower limb. The condition is when patent ductus arteriosus opens near to the origin of subclavian artery. इंटरमिटेंट cyanosis दिखाई देता है एब्स्टेंस एनोमली में. एंड देन साइक्लिकल cyanosis जो कि कॉर्नल अट्रेसिया में दिखाई देगा. ऑर्थोcyanosis दैट इज स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाई देगा. एंड cyanosis absent despite sufficient reduced hemoglobin, ये कब दिखाई देगा? अगर बॉडी में सीवियर एनीमिया है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है. और ये जो ऑर्थोcyanosis है ये एक्चुअली पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन अगर हुआ है तो ये पोस्चर चेंज में दिखाई देगा. Now let's see difference between central cyanosis and peripheral cyanosis. Central cyanosis actually hypoxic hypoxia होता है. एंड पेरिफेरल cyanosis इज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है. सो क्यों अपेयर होता है सेंट्रल cyanosis? इट इज ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन. देन पेरिफेरल cyanosis actually, if there is sluggish peripheral circulation, then it appears. So what are the sites for examining central cyanosis? ये टंग होता है एंड ओरल म्यूकोसा. देन पेरिफेरल cyanosis के लिए आप देख सकते हो टिप ऑफ नोज, ईयर लोब्यूल या फिर आउटर लिप, फिंगर टिप, नेल बेड एंड योर एक्सट्रीमिटीज. Now let's see hyperoxia test. The principle is that हम cyanosis की causes, whether it is hypoxia or pseudocyanosis that is metallic or drug causes, we can know it by asking the patient for the history of patient. But how can we differentiate cardiac causes and pulmonary causes? So for that we do hyperoxia test. So हम क्या करते हैं इसमें
पहले we have to give 100% oxygen for 10 minutes. Then we have to repeat a arterial blood gas. If we found patient pressure of oxygen is still less than 150 millimeters of mercury, then the cause is cardiac, and if more than 200 millimeter mercury, that is your partial pressure of oxygen is improving, then the cause is pulmonary. Then let's see some theories of cyanosis. It has 5 theories like admixture, target cyanosis, hypoxic cyanosis, replacement cyanosis, and distributive cyanosis. Admixture is due to sun. Target cyanosis is due to the reversal of sun. Then hypoxic cyanosis ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में दिखाई देता है. देन जो रिप्लेसमेंट cyanosis है, if there is any abnormal hemoglobin then it will appear. And जो distributive cyanosis है, if there is any venous pooling of blood then it will appear.